अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 और न्यू एडिशन है इसका। इसमें आज हम पढ़ेंगे वो है यूनिट 8 लेसन 3। ये है, इसके आगे साउंड का निशान है तो इसलिए मुझे यहाँ पे साउंड चलाना है ताकि जो है वो साथ साथ बच्चे पढ़े। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Unit 8, Lesson 3, Saving the Turtle. Listen as you read Saira's story. Then answer the question. Why were the numbers of green turtles falling? Parveen and I have just arrived at the Green Turtle Reserve. It is at Hawke's Bay, near Karachi. We are going to stay here for a few days and help. The Sindh Wildlife Department set up the Green Turtle Reserve in 1979. Before that, the number of turtles in Pakistan was falling. Now, turtles cannot be hunted or killed for food and the eggs cannot be collected. The project has been a great success. A few hundred turtles came ashore to lay their eggs in 1979, but the number has been climbing ever since. Rab Nawaz, Senior Director, Biodiversity of WWF Pakistan, stresses the need for a combined effort to conserve green sea turtles in the ocean around Pakistan. In a press release, he mentioned the problems of solid waste pollution, beach littering, and light pollution close to their nesting grounds. Other problems are already well known, most of them caused by humans. Many turtles became entangled in fishing nets, or they became poisoned by pollution in the ocean. Furthermore, people are building more beach houses, so the turtles cannot find sandy banks to dig their nests. Some poachers steal turtle eggs or kill adult turtles for food. Although they are called green turtles, the actual color is blackish brown or greenish yellow. They can grow up to 1.5 meters long and weigh up to 200 kg. They eat seagrass at the bottom of the sea. While we were there, we went out and collected eggs. Each of us watched an adult female turtle walk into the sand dunes. Then we watched quietly while she laid her eggs in the sand and covered them. When she had left and gone back to the sea, we marked the site with a stick. The next stage was to uncover the eggs. If we left them in the sand, wild dogs would dig them up and eat them. So we uncovered them very gently, put them in boxes, and carried them back to the Marine Turtle Reserve. There we buried them in sand, in pens, where the dogs cannot get at them. The turtles will hatch out their eggs in about 40 to 60 days' time. The greatest danger for turtles in the wild is when they are tiny hatchlings. First, they hatch out of their eggs, which are buried in the sand. Then they must come up to the surface and crawl tens of meters down to the edge of the sea. At this time, birds fly over the beaches, swoop down, and snatch the baby turtles in their beaks. I asked another helper, why can't we carry the baby turtles down to the edge of the sea? Then they will only have a short walk to water. I learned that baby turtles have to walk themselves because as they walk, their flippers become stronger. If we carried them into the water, they would not be able to swim because their flippers would be too weak. Interesting. We learned a lot at the reserve. ये है रीड सायरा स्टोरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये स्टोरी हमने पढ़ ली है और इसका क्वेश्चन ये है, व्हाई वर द नंबर्स ऑफ ग्रीन टर्टल्स फॉलिंग, फाइंड प्रॉब्लम इन द टेक्स्ट टू मैच द पिक्चर्स।
अब इस टेक्स्ट में सारा बताया गया है और ये पिक्चर्स बना दी हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जो है मैं पढ़ देती हूँ, आप लिख लें अपने। तो आंसर ये है, फर्स्ट जो है पिक्चर इसमें है, टर्टल्स बिकम ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स। सेकंड बी में है, टर्टल्स बिकम पॉइजन्ड बाय पोल्यूशन। थर्ड में है, पीपल आर बिल्डिंग मोर हाउसेज एंड और हट्स नियर द बीचेस। लास्ट वन में है, पोचर्स स्टील टर्टल एग्स। तो ये जो है इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर हम अगले में चलते हैं, ये है बी, मार्क दी सेंटेंसेस ट्रू टी और false F, correct the false ones। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, more turtles are hunted and killed in Pakistan than before। तो ये क्या है, ये false है, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने बताया था अभी कि गवर्नमेंट जो है वो उसको सेव कर रही है। देन यहाँ पे है लिखा हुआ, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लें। द सिंध वाइल्ड फायर डिपार्टमेंट सेट अप द ग्रीन टर्टल रिजर्व इन 1979। ठीक है, तो नहीं उसको नहीं होते अब ना, और ज़्यादा टर्टल को किल नहीं किया जाता। सेकंड वन है, मोर टर्टल्स कम अशोर टू ले देयर एग्स देन बिफोर। तो ये जो है ट्रू है। थर्ड है, टर्टल्स ईट फिश। नो, ये फॉल्स है। टर्टल ईट ग्रीन ग्रास, सी ग्रास। ठीक है, आगे है फोर्थ वन, अडल्ट टर्टल्स यूजुअली ले देयर एग्स एट द बॉटम ऑफ द सी बेड। तो ये फॉल्स है। इसके बजाय जो है ये वो आप इसमें ये लिख लें कि मोस्टली टर्टल lay eggs on the sand dunes। sand dunes dunes। अगला है, सायरा collected turtle eggs and brought them back to the reserve। तो जो ये है फिफ्थ वन, इसका भी बताया कि उन्होंने यस, सायरा की स्टोरी थी ना ये, तो यस ट्रू। सिक्स वन है, when the turtles come out of their eggs their flippers are not very strong। हाँ अभी हमने पढ़ा ना, तो ये भी ट्रू है। अगले में आ जाए सी में, complete the sentences with words from the text। जो टेक्स्ट में है वो वर्ड जो है उनके साथ हमने इनको कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं। जैसे वन है, when something is entangled it gets caught up so that it cannot free itself। तो entangled के स्पेलिंग में बता देती हूँ, entangled, entangled, फंस जाना। सेकंड वन है pollution, pollution। pollution is caused when ships spill oil at sea। थर्ड वन है poachers, poachers। poachers are people who kill animals or collect eggs illegally। फोर्थ वन है turtles lay eggs when they are एक साथ है ashore, when they are ashore, ashore, ashore। फिफ्थ वन है, Saira marked the site, site, of the nest when with a stick, Sixth one है, when baby birds or turtles come out of their eggs they are
hatch out, HATCH, hatch, OUT, out. It is seventh one है, it is safer to keep the eggs in pen than to leave them out in the wild, WILD, wild. Eighth है, turtles and babies crawl, CRAWL, crawl along the ground. Ninth है, when a bird swoops, SWOOPS, swoops down, it flies down very quickly through the air. Tenth है, to release, RELEASE, release something is to set it free. 11th है, when you tag, tag an object, you attach an identification label to it. Next में आ जाए, imagine that you are Saira. Tell the class about the work at the Green Turtles Reserve. You can refer to information from the fact file if you like. ये fact file है, तो ये है since 1970, 2.42 million eggs protected, 6.72 million hatchlings released, 8,000 adult turtles tagged, 30,000 adult turtles released from fishing nets. तो ये सारा इसके इस फैक्ट्स के साथ भी चल सकते हैं, अदर देन जो इसमें पिक्चर्स मौजूद हैं आप उनके साथ भी उनके अकॉर्डिंग भी चल के बात कर सकते हैं, तो बच्चे क्या ऐसे स्टोरी बना सकते हैं। तो ये वाला जो है पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला लेसन। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।